Good evening and welcome everyone. Today's webinar is exclusively on the expectations of first quarter results of FY23. यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या लाइकली रिजल्ट्स आ सकते हैं और अगर ये पर्टिकुलर वेबिनार की अगर बात करें तो हमने ये इसे इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है सो दैट आपको पता चले कि कौन से सेक्टर में पैट इम्पैक्ट हो सकता है या कोई अदर सेक्टर में इबिटा इम्पैक्ट में आ सकता है या किसी का सेल्स कम हो सकता है या किसी का इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। और हमने इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इवेंट्स को फेस किया है जिसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि इस रिजल्ट पे काफी देखने मिलेगा। जैसे कि हमने देखा रिसेंटली कि आईटी कंपनीज में हम लोगों ने पहले भी एक बार एक क्लियरली एक अनाउंसमेंट की थी, या तो जो हमारे वेबिनार से उसमें हमने एक क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि शायद इस बार के आईटी के नंबर्स है वो थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे और उसका जो मेन रीजन है वो क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम वाइल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन यानी कि ये पूरे महीने में या यहाँ से 1.5 महीने तक हम उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर कॉशियस रहते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई सेक्टर अच्छा करने वाला अगर है तो हम उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं विद अ व्यू कि अगर कोई करेक्शन अगर मिल जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, then in that particular sector we should look for adding few companies like जैसे कि ऑटो कंपनीज है या ऑटो सेक्टर है कि जहां पे हमें लगता है कि शायद नतीजे अच्छे आ सकते हैं, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर फोकस करना है तो इनमें कुछ एक स्टॉक्स है कि जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे और अगर कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर लाइकली जैसे एक्सपेक्टेड नंबर्स अगर वैसे ही नंबर्स अगर कोई कंपनी अगर डिलीवर करता है तो फिर हमें लगता है कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप आपकी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन भी ले सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस हमने इस पर्टिकुलर वेबिनार को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिए। हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम मैक्सिमम सेक्टर्स को कवर कर लेंगे। हर एक सेक्टर के लिए हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का वक्त देने वाले हैं, तो आप प्लीज फोकस कीजिए। हिंदी इंग्लिश में ये वेबिनार रहेगा और इसके बाद हम Q&A सेशन भी देंगे। तो हमें लगता है कि काफी सारे क्वेरीज हमारे ऑडियंस के पास है, हमारे व्यूअर्स के पास है, हम उसे बिल्कुल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये जो हमारा रिजल्ट सीजन है वो कैसे स्पैन आउट हो सकता है। तो अरुण अग्रवाल जो हमारे एक रिसर्च टीम के मेंबर्स हैं, आज वही इस पर्टिकुलर वेबिनार को प्रेजेंट करेंगे। ओवर टू अरुण। थैंक यू सो मच श्रीकांत। As today's webinar will talk briefly about how the overall, Nifty, what we can expect out of Nifty and Sensex earnings, and then we'll go on to sector-specific views. Before that, I'll just share a presentation. Just hold on for a moment. All right, so. For this quarter, one thing what one should be noting is that this time we might see a higher year-on-year growth for a lot of sectors. Now, this is because of a weak base of last year. Because last year, if you recall, there was impact of second COVID wave, though it was not so very severe as what we saw in first COVID wave, but still the numbers were impacted last year's first quarter. And so on that base, we are likely to see good growth on a year-on-year basis. For BSE Sensex, if you look at, there we are looking at a net profit or earnings growth of around 23% year-on-year as compared to first quarter FY22. This quarter, we are looking at 23% growth in earnings. For Nifty, we are looking at 27% year-on-year growth in earnings. However, when we compare and look how the Nifty companies and BSE Sensex companies would perform vis-a-vis fourth quarter, we are expecting a decline of between 10 to 11% for both BSE Sensex and Nifty 50 companies. This is a consolidated number that we are talking about. अभी Q-on-Q decline होने के बहुत reasons है। उसमें आप important देखेंगे तो most sectors में हम बोल रहे हैं कि they'll be reporting decline in their net income. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटोज में हम देखते हैं कि सप्लाई कंस्ट्रेंट रहा था और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी वीक रही थी फर्स्ट क्वार्टर में बिकॉज ऑफ दैट। बैंक्स में देखेंगे तो दैट कुड बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ सम ट्रेजरी लॉसेस। ऑयल एंड गैस में देखेंगे डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में आएंगे तो वहां पर शायद मार्केटिंग लॉसेस इम्पैक्ट करते हैं ये क्वार्टर में।
अगर आप सीमेंट में देखें तो सीमेंट में कॉस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आपका इनपुट कॉस्ट बहुत हाई थे फ्यूल पावर साइड पर। और अगर आप मेटल में देखें तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत लो जो एक्सपोर्ट इम्पैक्ट था उसका थोड़ा बहुत आप अर्निंग्स में इम्पैक्ट देख सकते हैं। ओवरऑल for BSE 30 index, this year we are looking at an EPS of 2647, and for FY23 and for FY24 we are looking at an EPS of 2991. ये लेवल पे इंडेक्स ब्रॉडली 20.5 टाइम्स FY23 नंबर्स पर और 18.1 टाइम्स FY24 नंबर्स पर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है करंटली। अगर हम निफ्टी के देखें तो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करें 806 रुपीज का EPS फॉर FY23 and 932 rupees in FY24. And looking at these numbers, Nifty is trading at close to 20 times, slightly above 20 times when we look at FY23 numbers, and around 17.5 times when we look at FY24 numbers. Recent last 2-3 क्वार्टर्स अगर हम देखें तो वहां पर what we have seen कि सेंसेक्स और निफ्टी की अर्निंग्स में थोड़ा कट हुआ है recent months में इनफैक्ट, and we like to note कि ये जो मेजोरिटी कट दैट्स हैपेंड इन रीसेंट मंथ्स बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, एंड द मेन रीजन फॉर दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ टैक्स ऑन सेक्टर्स लाइक मेटल माइनिंग्स एंड ऑयल एंड गैस. Apart from results, I think another important factor that we would be watching out for going forward as and when the results are announced is on the management commentary. I think demand, ये करंट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में डिमांड किस तरह पैन आउट हो रहा है, और कमोडिटी प्राइस में हमने थोड़े से करेक्शंस देखे हैं तो उसके बेनिफिट्स किन किन सेक्टर्स को आगे आ सकते हैं. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स वी वुड लाइक टू वॉच इन मैनेजमेंट कमेंट्री एज एंड व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड. Let us start with a sectoral view or sectoral update here. Firstly, on the auto and components. See, ऑटो एंड ऑटोमोबाइल में आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था थोड़े बहुत वॉल्यूम्स सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के वजह से इम्पैक्ट हुए थे. यहाँ पर ब्रॉडली वी आर टॉकिंग मोर ऑन ये Q&Q बेसिस, बिकॉज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हाई है, बिकॉज लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर जैसे मैंने कहा था इम्पैक्टेड रहा है क्वार्टर. सो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे हम OEMs के रेवेन्यूज एक्सपेक्ट करेंगे 2% से डिक्लाइन होंगे. अगर हम वॉल्यूम वाइज सेगमेंट वाइज देखें तो पीवीज में हमने देखा है कि there has been single digit decline in passenger vehicle volumes because of supply constraint, चिप की shortages रही है. सीवीज में देखेंगे, सीवी एक ऐसा सेगमेंट है जो Q4 बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद Q1 में थोड़ा जनरली वी सी सम डिक्लाइन एज कंपेयर टू Q1, तो थोड़ा सीजनलिटी फैक्टर होता है इसके वजह से. तो Q1Q बेसिस पे हम डबल डिजिट डिक्लाइन देख रहे हैं सीवी वॉल्यूम्स में. सो अकॉर्डिंगली आप अगर अशोक लेलैंड देखें या दूसरे कंपनीज जो इस सेगमेंट में ऑपरेट होते हैं या ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, तो Q-on-Q बेसिस पे आप वो इम्पैक्ट देखेंगे. टू व्हीलर साइड पे वी आर एक्सपेक्टिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ इन रेवेन्यू ड्यू टू हायर वॉल्यूम्स एक्सेप्ट फॉर बजाज ऑटो ईयर. In terms of margins, we expect the margins to remain flat quarter on quarter, except for Tata Motors here. We are not including Tata Motors in this, as price hikes which have been taken by OEMs will broadly be offset by the raw material headwinds that we saw in Q1. तो जो price hike companies ने ली थी recent quarter में, that will get offset by raw material increases. So ये क्वार्टर हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स ब्रॉडली फॉर द एंटायर सेक्टर OEM साइड पर फ्लैट रहेंगे. अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स में आएंगे तो यहाँ पर हमारी कवरेज कंपनीज में वी आर लुकिंग एट अ म्यूटेड क्वार्टर विद 2% Q-on-Q रेवेन्यू ग्रोथ. तो रेवेन्यू ग्रोथ हम बहुत लो देख रहे हैं, और मार्जिन्स भी हम थोड़ा सा 30 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले इंप्रूव होगा. दिस इज फॉर द ऑटो एंसिलरी कंपनीज. यहाँ पर अगर क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखिए तो हमारा राजा है, अपोलो टायर्स है, बालकृष्णा है, एंड्योरेंस है, एस्कॉट्स है, M&M है. ये सब कंपनीज में हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी बहुत अर्निंग्स ग्रोथ होगी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस है, बट दैट विल वेरी कंपनी टू कंपनी. नाउ टॉपिक्स हमारे ऑटोज में हैं, हम जिसमें पॉजिटिव है वो अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है. दीज आर 4 कंपनीज दैट वी लाइक इन द ऑटो स्पेस. जो जैसे से इनमें कहीं डिक्लाइंस आते हैं तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए. कमिंग टू सीमेंट, सीमेंट में ये थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वार्टर रहने वाला है. सीमेंट डिमांड स्टार्टेड इन अप्रैल ऑन अ वीक नोट, बट उसके बाद थोड़ा पिकअप हमने देखा है डिमांड में मई के बाद. फॉर इंडस्ट्री वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडस्ट्री के डिमांड जो ग्रू हुए हैं वो 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट अगेन दिस इज कमिंग ऑन अ लो बेस ऑफ लास्ट ईयर. अगर हम प्राइस इंक्रीजेस की बात करें तो पैन इंडिया लेवल पर रिटेल प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय अराउंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 8% एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर. Now, cost escalation हमने बहुत देखे है सीमेंट में recent months में, and that will continue to impact earnings and EBITDA for cement companies in this quarter.
अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो वहाँ हमने लिखा हुआ है कि कॉस्ट को हम देख रहे हैं कि 7 to 8% क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज है फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीज इन पावर फ्यूल कॉस्ट, एंड इन द पास्ट 6 months एंड बिकॉज ऑफ हायर फ्रेट कॉस्ट भी काफी हाई रहे थे। तो इसकी वजह से हम सीमेंट कंपनीज का एबिटा पर टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 10 to 12% डिक्लाइन होगा फॉर कंपनीज अंडर ऑन कवरेज। ओवरऑल फॉर सेगमेंट अगर आप देखें तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स और एबिटा देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे वी माइट सी शार्प डिक्लाइन इन बोथ एबिटा एंड अर्निंग्स फॉर सीमेंट क्वार्टर। But hopefully आगे चल के when the companies are able to pass on prices, we expect situation might improve going ahead towards second half of this year. I now hand over to my colleague Amit. Thank you, Arun. I will take you through two sectors. First is consumer. हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये स्टेज सेट हो गया है कंज्यूमर कंपनी के लिए टू डू वेल in terms of volumes and financial performance. For Q1FY23, we believe volume and value growth for most consumer companies to be very stable, and this is despite strong inflation and associated price hike. First expectation जो हमारी है वो है कि volume growth and value growth would be very stable for staples. We expect modest volume growth and high single digit to low double digit value growth across staples pack. Food and beverage categories should do far better than home and personal care categories. We expect Hindustan Unilever, Britannia, Nestle and ITC to lead the pack. हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन खर्चा काफी कम कर देगी टू डिफेंड मार्जिन पार्शियली. Operating profit growth and earnings growth would be slightly soft for most companies, primarily because of raw material inflation. Second key expectation ये है कि there would be continued strength in paints and adhesives, and Asian Paint would lead this area with 19% value growth in domestic decorative paints, and it would be followed by Pidilite. Alcohol beverages player could disappoint a bit on high expectation. We also expect QSR players like Sapphire, Devyani, Bector's Food, Burger King, and Westlife Development, except for Jubilant Foodworks, to deliver better print versus our beginning of the quarter expectation. मोटा है कि margins could bottom out for consumer companies, and margin recovery led earnings upgrade could start from the current quarter, especially with the fall in palm oil and crude oil. In our sector, we are very positive on Hindustan Unilever with a target price of 2525, Godrej Consumer with a target price of 925, Varun Beverages with a target price of 850, Jubilant Foodworks with a target price of 615, and Sapphire Foods with a target price of 1425 are our preferred picks in the consumer sector. Next. Next sector that I will take you through is transportation. अभी आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आप ब्रॉडली देखोगे तो ये एक ऐसा सेक्टर है which has done very well in the last 2 quarters, especially if we see movements in stocks like Blue Dart, Alcargo, Adani Ports, and even VRL Logistics. Performance of most of the companies in the logistics segment, including Container Corporation, Gateway Distriparks, Alcargo, is linked to container traffic in India. And container traffic at all the major ports was reported at around 2.87 million TEUs, which was up by around 5% year on year. The volumes were largely flat due to ongoing war in Russia and supply chain disruptions globally. However, domestic business remains very resilient for transportation companies. There is also strong economic growth. Trade remains very strong, and implementation of GST, which has impacted positively to most of the transportation companies. हमने ये भी देखा है कि volumes are shifting from unorganized sectors to organized players like VRL, Alcargo, in the last 2-3 years post implementation of GST, and which has immensely benefited these companies, and we expect
this trend to continue in the current quarter and in near term as well. Our preferred picks in logistics space are Blue Dart with a target price of 8260. We are expecting upgrades in the current quarter. Aegis with a target price of 300, Alcargo with a target price of 430, and VRL with a target price of 730. Over to Himali. In the banking and financial services space, what we're expecting muted revenue growth. One of the reasons is the higher treasury losses that the banks will have to account. In the quarter, 150 bips increase in short-term yields will impact the investment portfolio. However, there is opportunities for banks in terms of an accounting recording of this item, which could spring a surprise for us. For now, we have factored full recording of this treasury losses in their accounting through the P&L, because of which the profits QOQ basis will be lower by 30%. However, on a YOY basis, both NII and profits will be higher by approximately 15 to 16% for the whole sector. Another positive for the sector is the strong recovery in loan growth. We've seen a lot of banks report pre-earning data where they've shown that not only large banks but also mid-sized banks are showing strong loan growth. Provisions for the banks will also be lower this time, and the NPL ratios are declining further for the entire sector. The provisions for mid-sized banks, which had been affected by COVID more than the larger banks, are also going to be positive. Another factor in NBFC is, again, there is a strong underlying demand across sectors, both for housing, vehicles, consumer durable. Recovery is, though seasonally weak for sectors like asset financiers, has held on well. There's going to be cost of fund increase for NBFCs because of the sharp rise in MCLR and benchmark repo rates, and should put pressures on NIM. Although the impact also depends on how the loan portfolio or the borrowing portfolio of the bank is, and there's always some amount of transmission in the rate hikes as well. Having said that, the business outlook in the backdrop of macro challenges will drive stock prices. Though the demand stays high, the ECL is higher and capitalization is good for the banks, the macro factor is something that will impact stock performance. Amongst the sector, we like Cholamandalam and we like Mahindra Finance. Within banks, we like ICICI, Axis, and SBI. And we like affordable housing finance companies as well. I'll now hand it over to my colleague. थैंक यू हेमाली. अभी हम मेटल्स एंड माइनिंग की बात करेंगे. जैसे कि आपने सुना रहेगा कि अरुण ने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो भी गिरावट हम लोग निफ्टी अर्निंग्स में देखी है या डाउनग्रेड हमने हुई है, दैट्स लार्जली बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स ऑन द इधर ऑन द मेटल्स और ऑन द ऑयल एंड गैस स्पेस. सो पहले हम मेटल्स एंड माइनिंग की बात करेंगे, फिर मेरे सहकर्मी आपको ऑयल एंड गैस के बारे में डिटेल्स बताएंगे. तो अगर मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हम मेटल्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक तो फेरस विच इज अ स्टील, जहां पे हमने देखा हुआ है कि एक्सपोर्ट टैक्स लगने के बाद स्टील प्राइसेस काफी हद तक 8 से 10% करेक्ट हुआ है. बट ये क्वार्टर हम देख रहे हैं कि फॉर दिस क्वार्टर वी एक्सपेक्ट द स्टील रियलाइजेशन टू लार्जली गो अप बाय 2500 to 3000 रुपीज पर टन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें. बट बिकॉज ऑफ द लोअर एक्सपोर्ट प्राइसेस which had got impacted because of the export duty, the overall realization is expected to come. And with this, the volume year on year अगर हम देखोगे तो volume definitely अच्छा रहेगा, because last year which was on a COVID base, COVID के हिसाब से जो volume impacted हुआ था, तो ये quarter year on year definitely numbers अच्छे रहेंगे, but sequentially हमें काफी गिरावट देखने मिलेगी, not only in the volume term but also अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में देखते हैं, जो हम एबिटा लेवल की बात करते हैं, जो जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, अगर उसको देख रहे तो उसमें एक तो वॉल्यूम की गिरावट है जहां आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज कम हुई है, और दूसरी कॉस्ट बढ़ी है, जो कोकिंग कॉस्ट करीबन करीब $100 से $150 तक की ये क्वार्टर में इम्पैक्ट आएगा. इसलिए हमें लग रहा है कि जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है विच विल बी हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. सच है, अगर आप एबिटा पर टन देखते हो तो टाटा स्टील का हम 20% की गिरावट मांग रहे हैं, सेल में हम 34% गिरावट सोच रहे हैं सिक्वेंशियली. बल्कि जो कंपनी में कम गिरावट रहेगी वो रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां हम 14%,
और JSPL हम 14% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट उसी टाइम पे अगर हम नॉन फेरस जो बेस मेटल्स की बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक है, कॉपर है या लेड है, वहां पे जिंक में प्राइस सिक्वेंशियली बढ़ी है 5%, जबकि बाकी सब में एल्यूमिनियम प्राइसेस जो 34% डाउन है फ्रॉम इट्स पीक। लास्ट क्वार्टर में 12% की गिरावट थी और एल्यूमिना प्राइसेस में 10%। सो बिकॉज ऑफ दिस द परफॉर्मेंस विल बी इम्पैक्टेड एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लोअर वॉल्यूम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस. सो overall metals and mining पे there will be a margin pressure in the first quarter and probably we will wait for the better entry point. As of now we have underrated or we have a reduced rating or a sell rating on majority of the ferrous space, and in non-ferrous Hindalco remains our preferred bet. Coming on to the specialty chemicals, on the specialty chemicals, because of the price increase and volume in the selected pocket, we expect that जो कंपनीज हमारे कवरेज में है वहाँ रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी. उसके चलते हमें एबिटा ग्रोथ भी दिखाई देगा. जैसे कंपनी लेगा बतुल की बात करो, आरती इंडस्ट्रीज, क्लीन साइंस, एसआरएफ की बात करो, जहाँ पे एसआरएफ में रेफ्रिजरेटर का वॉल्यूम काफी हद तक स्ट्रांग रहा और प्राइसिंग इंक्रीज भी आई है. सो रेफ्रिजरेटर छोड़ के बाकी सब में मार्जिन प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है. इसलिए जो मार्जिन है अक्रॉस द बोर्ड विल सी अ डिक्लाइन एक्सेप्ट फॉर एसआरएफ एंड Q1 will see a full impact of the cost escalation. Secondly, अगर आप sequential decline देख रहे तो Vinoti will have a bigger impact on the lower prices and possibly Navin Fluorine due to the elevated cost because that get impacted immediately and not in a lag effect. और उसी समय हम fertilizer and agriculture chemicals की बात करते हैं तो growth will remain subdued because of a late monsoon arrival. Revenue growth बल्कि आपकी double digit रहेगी driven by a price hike, whereas volume will remain muted. और यहाँ पे भी हम margins हमें लग रहा है कि under pressure रहेगा because of the elevated cost. So yes, margins will remain across under pressure in the chemicals as well as in the metal space. So that's all from my side. Over to Pankaj. Pankaj, you are not audible. नहीं पंकज. I think there is some technical issue. Yeah. Now you try. That's fine. Pankaj, please. Now okay? Yeah. Yes Pankaj. Yes, perfect. So sorry for the technical glitch. So as I was saying, capital goods companies का जो हम लोग expect कर रहे हैं revenue front पे quite strong रहेगा. 24% YY growth हम expect कर रहे हैं in our coverage universe. This is largely led by strong order backlog और उसका जो execution होगा उसके वजह से. और लास्ट ईयर का अगर बेस देखेंगे तो वो भी काफी वीक था. तो उसके बिकॉज जो Q1 में कोविड का एक इम्पैक्ट था सेकेंड वेव का, तो इस लो बेस पे एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन की वजह से टॉप लाइन काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है. लेकिन अगर मार्जिन्स की बात करेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वहां पर सम इम्पैक्ट विल बी सीन बिकॉज ऑफ द हायर कमोडिटी प्राइसेस. डिफेंस प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दैट वी हैव सीन इन द डिफेंस सेक्टर. और वहां पर भी जो कंपनीज हैं उनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है. आगे अगर मल्टी ईयर ऑर्डर बैकलॉग उनके पास है तो ये आगे भी अच्छा रहेगा. रोड कंपनीज में भी हमने देखा है कि टोल रेवेन्यूज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन Q1 and due to that the companies like IRB is expected to report good numbers. L&T, as I said, because ordering Q1 में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ as it was in Q4. एंड जो ग्रॉस मार्जिन का एक इम्पैक्ट जो दिखेगा EBITDA मार्जिन का अराउंड 50 बिप्स, उसके वजह से थोड़ा वो मार्जिन प्रेशर रहेगा. एंड अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे नंबर्स में, ABB जो अदर कैपिटल गुड्स कंपनीज है लाइक ABB, सीमेंस, थर्मैक्स, वहां पर अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है.
barring Siemens, ABB and Thermex are also expected to report good margins because of the higher revenue and economies of scale. Next, please. Yeah. So real estate broadly we'll discuss in two segments, residential and commercial. Real estate companies ने काफी अच्छा sales performance दिखाया है last year, and even on that high base also the companies are expected to report good sales volume numbers. जो खास करके जो लीडिंग डेवलपर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जो बड़े डेवलपर्स हैं, वो काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं. अभी कंपनीज ने नंबर्स भी रिपोर्ट किया है, लाइक शोभा का आपने रिसेंटली देखा होगा, काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं. So this is based on a strong demand and the new project launches, because companies launch भी अच्छे कर रही हैं, and customer का जो preference है that is also now shifting towards quality. So based on all these factors, the companies are expected to get good numbers in the residential space. इसमें अगर हमारा जो इस क्वार्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो सनटेक काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द लॉन्चेस, एंड डीएलएफ बिकॉज ऑफ द न्यू फेजेस जो वो लॉन्च कर रहे हैं, इसकी वजह से वहां पर रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है. कमर्शियल साइड में अगर देखेंगे तो जो ऑक्यूपेंसीज है, इट इज दैट ऑन द कमर्शियल फॉर द कमर्शियल कंपनीज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव. वहां पर जो बैंगलोर बेस्ड कंपनीज है वहां पर थोड़ा सा ऑक्यूपेंसीज इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज अभी स्टिल देयर इज अ वर्क फ्रॉम होम is continuing in the IT space and all. But in the other areas, in the other geographies, we can see commercial companies are expected to report good occupancies. Hotel sectors में भी अगर आप देखेंगे तो occupancy काफी पिकअप हुआ है. The festive this holiday season was quite strong, so hotel companies are also expected to report good numbers. So that's it from my side. Over to Purvi. Thank you, Pankaj. Good evening, viewers. So we shall now go through the expectations on pharma sector and post that on the healthcare sector. So in the pharma sector, we're expecting a subdued Q1. Now, a couple of reasons. As we've been speaking in our last couple of sessions, that the sector is facing raw material inflation and higher logistic costs. So that still continues in the first quarter as well. However, on the domestic front, we're expecting 10 to 12% YOY growth, despite there was a high base of COVID for most of the companies in the corresponding quarter last year. The benefit that there's going to be there is the price increase that has happened in the first quarter, which also will start reflecting, but will be more visible from second quarter. Thereafter, in the US front, we feel that since there are not many launches that are planned for most of the pharma companies, continuing US generic pricing erosion will keep the margins under check. However, a silver lining here is that the INR has depreciated, so that is also likely to provide some relief. But we mostly expect most of the benefits to start coming from Q2 of the year. That's basically because that's the strongest season for the pharma sector. Next slide, please. So now we move to healthcare, and in the healthcare space, on the hospitals front, we are very comfortable here. That's basically because we're expecting that sequentially the Indian hospital business is likely to show improvement. That's basically because of the increased domestic and international footfall. However, in the Q4, we'd seen Omicron impact. So because of that, the Q4 was not up to the mark. However, from now onwards, we can expect sequential improvement to happen. Also, the input-output patient volume has not yet completely recovered, but has improved. If we see in the Q4 quarter, it was 5%, but is gradually moving towards pre-COVID levels. So we note that the Q1 performance is not going to be as strong as Q3. However, it is going to be much better than the Q4 on the back of higher footfall. On the diagnostic fronts, we're expecting that the companies will have sequential recovery on the non-COVID volumes front, but the COVID segments are expected to slip henceforward. And we expect that the non-COVID realizations are going to largely remain flattish. That's mainly on account of the competition that is happening because of a lot of other players also entering into the space. So for Dr. Lal and Metropolis, we expect partial benefit
That's mainly on account of the acquisitions that they have done in the past quarter. They'll start now reflecting into the numbers and will give some benefit. That's all from me. I now hand over to Sumit. Thank you. In IT sector, we have seen the first result of TCS. Obviously, the result was not as expected. There was a miss on the margins front. There was a miss on the total contract value, which accrued at the end of this quarter, Q1. So broadly, आगे जाके अपने को IT results अगर देखने हैं तो हमको इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. हमने अपने प्रीवियस सेशंस में काफी बार हाईलाइट किया था कि सब IT कंपनीज को मार्जिन प्रेशर तो आने ही वाला है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज, ट्रैवल कॉस्ट इंक्रीज एंड अदर एडमिन कॉस्ट इंक्रीजिंग. बट हमें आगे जाके लगता है कि इन्फोसिस जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू द अदर पीयर्स. ये हमने अपने रिजल्ट प्रीव्यू में भी डाला है. द ग्रोथ विल बी अराउंड 4.5%. ये क्वार्टर सीजनली वीक क्वार्टर होता है फॉर टेक महिंद्रा, विप्रो एंड HCL टेक, बट माइंडट्री के लिए ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है. सबको लग रहा होगा रूपी काफी डेप्रिशिएट हुआ है तो IT कंपनीज को फायदा करेगा. आपको मैं बताना चाहूंगा TCS का जो टॉप लाइन है उसमें 2.2% करेंसी का इम्पैक्ट आया है जिसके कारण उसकी ग्रोथ कम दिखी है 2.2%. सो दैट इज व्हाई इज इट सो हैपनिंग बिकॉज ये जो कंपनीज है ये एक करेंसी में, डॉलर में अकेले में ट्रेड नहीं करती है. इनका ट्रेड यूरो में भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी होता है, अदर करेंसीज में भी होता है. सो ब्रॉडली उनके साथ कैसा आपका रूपी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगा वो भी देखना पड़ता है साथ में. वी एक्सपेक्ट 70 to 400 basis point year on year decline in EBIT margin across our coverage universe. रीजन क्या है उसका सिंपल है कि बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट हैज इंक्रीज, वीजा कॉस्ट हैज इंक्रीज, डिक्लाइन इन यूटिलाइजेशन एज कंपनीज आर हायरिंग फ्रेशर्स, तो उनको इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं कर सकते तो वहां पे यूटिलाइजेशन कम हो जाती है बट योर कॉस्ट इंक्रीजेस इमीडिएटली. कंपनीज विल कॉल आउट स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन, ये तो सब में दिखने वाला है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है कि अट्रिशन क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए IT कंपनीज. हमने पहले भी हाईलाइट किया है कि हायर अट्रिशन विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट फॉर IT कंपनीज और वो मार्जिन प्रेशर भी लेके आएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑयल एंड गैस में अगर अपन बात करें जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उनके डेफिनेटली अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी लाइक ONGC ऑयल इंडिया. क्यों रहेगी? बिकॉज हायर क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट $14 इंक्रीज हुआ है सिक्वेंशियली, तो वो डेफिनेटली उनको पॉजिटिव रहेगा. शार्प क्वार्टर इंक्रीज इन डोमेस्टिक गैस प्राइस टू $6.8 पर MMBTU, वो भी रियलाइजेशन इंप्रूव करेगा, मार्जिन इंप्रूव करेगा. एंड हायर प्राइस ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. वॉल्यूम्स टू रिमेन म्यूटेड, वहां पे इमीडिएटली वॉल्यूम कोई ग्रोथ नहीं दिखना है. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द हायर रियलाइजेशन दीज कंपनीज आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड. डाउनस्ट्रीम में देखिए अगर अपन तो वी एक्सपेक्ट जो भी OMCs है, HPCL, BPCL, IOC, उन सबको EBITDA में काफी पेन दिखने वाला है. इनफैक्ट सिक्वेंशियली वी एक्सपेक्ट डिक्लाइन फॉर IOC EBITDA. व्हाई इज इट सो हैपनिंग? बिकॉज एक तरफ उनके मार्केट रिफाइनिंग मार्जिन बहुत स्ट्रांग है जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, क्रूड थ्रूपुट भी स्ट्रांग है, मार्केटिंग वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, इन्वेंट्री गेन्स भी आ रहे हैं उनको. बट ऑन द अदर साइड वो लोग जब रिटेल में फ्यूल बेचना जाते हैं एट रिटेल आउटलेट, वहां पे उनको लॉस में बेचना पड़ रहा है. तो वो जो प्रॉफिट रिफाइनिंग में हो रहा है वो उसका सबसेट हो रहा है ऑन द फ्यूल मार्केटिंग साइड. सो दैट इज द प्रॉब्लम. कमिंग टू रिलायंस, रिलायंस का रिजल्ट हमको बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है. इनफैक्ट 50% सिक्वेंशियल जंप इन प्रॉफिट्स आ सकता है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज significant increase in GRMs, higher volumes in refining and petchem segment, and higher contribution for upstream segment. So ये लगता है, but petchem में we might see some decline. जियो से expectation काफी अच्छी है, हमको अच्छा लग रहा है वहाँ पे. So Reliance से we are very very optimistic on Reliance results. Next please. Coming to gas utilities, which includes GAIL, GSPL, IGL, MGL, and Petronet LNG, 22% year-on-year increase in net profit लग रहा है, but sequentially because base effect आएगा, तो 16% decline दिखेगा अपने को in covered companies में. Sales to grow by 15% sequentially, but EBITDA to decline by 8% sequentially.
EBITDA margin to decline 11.2% in in Q1 FY23 from 14%. So ये बेसिकली आप इसमें क्या एनॉमली आ रही है कि गैस प्राइसेस बढ़ गई है तो उनका टॉप लाइन ज्यादा बढ़ गया, बट सी दिस इज कमोडिटी, तो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एबिटा मार्जिन पे नहीं देखा जाता, पर यूनिट मार्जिन कितना कौन कमा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आईजीएल एमजीएल दे विल डू वेल, उनको काफी हद तक वैल्यूएशन में प्राइस्ड इन है. कंसर्न्स EBITDA to IGL's EBITDA to rise by 11% sequentially, MGL's EBITDA to rise by 45% sequentially, और Petronet LNG का EBITDA to decline by 10% as higher of take from Dahej terminal will offset by decline in margin on spot volumes, because अपन ने देखा है कि LNG prices भी काफी shoot up हो गई थी इस quarter में. So this is the crux of all the oil and gas and sector. Now I pass it to Rini for Q&A. Thank you, Sumit and team. Dear participants, note that our recommendations in this presentation are for the 12 months horizon. We will now open the floor for Q&A. So drop your questions in the comment section below. Now starting the first question for Shrikant sir. Actually, I'll combine two questions from Karan and Vasudevan. What can be the market bottom, and if you can give your overall view on currency, sir? Yeah, sure. See, for currency, very first we need to understand that India or Indian economy is basically a domestic consumption story, and wherever there is a domestic consumption story sort of scenario, most of the time we see the currency depreciates in the long run. If you consider the period of last 20 years, then in the last 20 years, we saw the currency was depreciating slowly, steadily to the levels of, now it is at 79. It was around some 54, 55 levels. From there, all the way it is depreciating regularly. Also, if you consider, there are like number of factors which affects to the overall performance of the currency, but two important factors like import of crude and import of gold. These two things are like major contributors. And if we just go through with the overall data, then those countries which are importing heavily this crude and gold, they are facing this problem. So broadly, we are of the view that we are going to see furthermore depreciation in the long run. But in the near term, we are expecting now close to 80 levels. The currency should halt. It should spend some time around these levels. It is based on technicals. It is based on technicals of even dollar index, because there we are seeing a lot of, I mean to say, whatever the outflow is here in India, we are seeing a lot of money is again shifting back to developed markets, especially to US markets. So we need to consider, or we need to see the overall trend of dollar index, and dollar index is still above the crucial level of 105. So we were not expecting dollar index to trade above the levels of 105. And if we go through with the chart of last 30 years of dollar index, तो एक बात समझ में आएगी कि it is like now having no resistance at least up to 110. Above 110, it has no resistance up to 130. All these scenarios we are not expecting right now, but yes, the possibility of hitting 110 are very high, because still we have to face two major events. One is interest rate meeting of this month in US from the Fed, how they actually go for the rise of their interest rate. And also in the month of September-October, we need to see that how actually they roll back to the quantitative easing, how they go for the quantitative easing. So whatever the money that they infused to support the economy during the pandemic period, how they roll back to that. ये दो फैक्टर्स के ऊपर हमें लगता है कि करेंसी का मोमेंटम डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बिकॉज वी आर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, अगर करेंसी डिप्रिशिएट होता है तो इट्स ओके. इट शुड नॉट बी इन अ हरी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. It is moving gradually to the next level, and in the short term we saw steep appreciation for dollar index, steep appreciation for the dollar, and that's the reason we saw steep decline for our currency. Otherwise our currency is
depreciating, but it is depreciating relatively much gradual as compared to the past. So that means we are doing little bit better, or we can say we are on the better side as compared to the past trend of the currency. Now, if we go through with the trend of the market and the bottom for the market, I'm telling you, it is very difficult to say that where the market will stop. But always we need to see that after hitting the important level, whether the market is again coming back at least 10% or more from the lows or not. For example, the market was around 15,180 in the recent fall. From there, if the market starts trading above the levels of 16,800, then we can expect momentum, or we can say that the market is bottomed out. But if the market fails somewhere close to 16,300 or 400, where the market is having multiple resistance, then we can expect further more weakness. In the past, when the market was around 15,600 in the month of March, after that we saw rally in the market, but it again halted somewhere close to 16,800. That time we were targeting the levels of 17,300, but there it failed. So एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट का बॉटम डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, और वो अगर क्रूड अगर यहाँ से वापस अगर 120 अगर हो जाता है, 120 अगर हो जाता है, तो हमारा व्यू चेंज होगा. अगर यहाँ से क्रूड अगर 94, 95 अगर होता है तो व्यू चेंज होगा. लेकिन अगर प्राइस नोज एवरीथिंग, अगर एक ही फंडे को अगर पकड़ के चलते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट में एटलीस्ट 10% की जब हमें रैली देखने मिलेगी फ्रॉम द बॉटम, तब हमें लगेगा कि यस, मार्केट बहुत सारी चीजों को डिस्काउंट करके चल रहा है और अभी यहाँ से ये मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है. बट यस, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर बात करें तो हमें लगता है कि 16,400, 16,800 मार्केट के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है. आई डोंट थिंक कि मार्केट इन लेवल्स को इतने इजीली क्रॉस करेगा. At the same time, on the downside, possibility of hitting 15,200 are very high. And in case if there is any furthermore some problem in the economy or something goes wrong because of some event, then the market may even retest the levels of 14,500. So technically अगर बात करें तो जब तक 16,000 के ऊपर है तब तक हम लोग बचे हुए हैं वेरी शॉर्ट टर्म में. बट अगर 16,000 के नीचे ही अगर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे तो हमें लगता है कि एक बार हम लोग शायद 14,500 के लेवल्स देख सकते हैं. Thank you, Shrikant sir. Next question is from the IT space. Sumit, Karan wants to know if TCS is among the good IT shares to buy. Yeah, time and again we have been saying that our top pick in IT, large cap IT space is Infosys, HCL Tech, and tier 2 we are liking more of on rather than just focusing on large cap. There's one stock which we also like in emphasis in tier 2 IT stocks. So there is a big problem with if you look at the quarterly results of all the IT companies, in this quarter margin pressure was anticipated, but margin pressure was higher than what is it has come. So what we are trying to say here is कि broadly TCS is a good company. ये एक क्वार्टर का पेन है. गोइंग फॉरवर्ड मार्जिनली दिस हेडविंड्स जो अपन ने देखे हैं इस क्वार्टर में, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय प्राइस इंक्रीज एंड अदर फैक्टर्स, कॉस्ट कंट्रोल्स. जो अट्रिशन लेवल जो काफी हाई दिखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू रिमेन वेरी एट एन एलिवेटेड लेवल. सो देयर विल बी लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स व्हिच विल कम. So from a longer term perspective, we do like TCS, but our topic remains Infosys and HCL Tech. Thank you, Sumit. Next question, sorry, is from Gurjeet. Purvi, he wants to know prospects for Max Healthcare. Thank you, Rini. So on the Max Healthcare, we have an ad rating on the stock with a fair value of 410, which is around 13 to 14% upside from the current levels. So as we've said that we expect the hospitals to do better on this quarter. And in Max, if you see, they have almost 70% of their sales coming from their high-end services like veterinary and tertiary care. And also, they have a better sales mix and are expecting the sales mix for international to be improved to 15% by the end of FY23, which is 5% currently.
So we feel that there's going to be a healthy free cash flow generation over the next 2 to 3 years, and we are expecting a 17 to 18% earnings CAGR over next 2 to 3 years. So we'd suggest that if you have the stock, you can hold on to it and can add on corrections. Thanks. Sorry, yeah. Purvi, can you also answer Pratima's query on Lupin? Yes, so on Lupin also we have a ad rating. However, we would suggest that one can look out for the Q1 numbers. If there is a sequential improvement that's been seen, and if the commentary from the management is a little bit encouraging, that could give a positive movement to the stock. A couple of their US FDA issues at 2 of their sites have been resolved, so that's a little bit of a breather, but we need a little more positive outlook from the management. So I would rather suggest take a call post the earnings numbers. Thank you, Purvi. Next question is for Amit sir. Amit sir, Gauri Shankar is asking your view on ITC. Yes. See, we have been positive on ITC all along. Currently, we have a buy rating on the stock with a target price of 310. ITC अगर आप देखो तो it's a good combination of decent growth, dividend yield of around 5% and inexpensive valuation of around 18 times FY24 earnings, which is almost at 50% discount to peers in FMCG space. सिगरेट बिजनेस काफी स्टेबल है कंपनी का लास्ट 15-20 सालों में आप देख लो. FMCG लास्ट few quarters is doing well with continued increase in margins despite raw material pressure, जबकि बाकी आप FMCG peers को देख लो तो उनका raw material inflation की वजह से margins काफी erode हुए हैं. Hotels and paper boards and agri business are tracking well for the company with opening of economy. ESG related selling by foreign investors seems to be over in the stock. In fact, अगर आप देख लो तो the stock has outperformed Nifty and FMCG index with a huge margin in the last 6 months. Company is also looking to list its IT subsidiary, that is ITC Infotech, which will create value for the stock. मोटा मोटी हमको ऐसा लगता है कि कंपनी नेक्स्ट 2 सालों में डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देगा. This would be led by recovery in cigarettes, hotels and steady performance in FMCG and paperboard. We value the stock using SOTP methodology and recommend buy with a target price of 310. Stock price जो CMP है वो काफी टारगेट प्राइस के पास ट्रेड कर रही है, लेकिन हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद वी मे अपग्रेड द स्टॉक. That's it. Thank you, Amit. Next question is from Uma Shankar. Infra industries growth prospects in the aftermath of Russia-Ukraine war, like say it ends in 3 months. Can you give your views, Pankaj sir? Yeah, sure. So as I said, infra जो सेक्टर है यहाँ पर अभी जो भी मोस्टली कंपनीज देखेंगे बारिंग L&T, सारी कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट इंडियन मार्केट पे फोकस्ड हैं. L&T एक इंटरनेशनल मार्केट में काफी एक्टिव है. और रही बात रशिया यूक्रेन वॉर अगर एंड होता है तो एक इंफ्रा डिमांड जो आएगा वो यूक्रेन और ये जगह से वहां अभी एज ऑफ नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से how much the Indian companies will look at that as an opportunity. But of course, from domestic market perspective, opportunity is quite strong. अगर आप गवर्नमेंट का जो विजन आप देखेंगे, गति शक्ति प्रोग्राम है जो, अगर उसको हम अगर देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काफी कैपेक्स होना है. रोड सेक्टर में काफी ऑलरेडी अवार्डिंग काफी स्ट्रांग है और Q4 में तो काफी जबरदस्त गवर्नमेंट ने रोड प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं. दिस ईयर आल्सो द आउटलुक इज क्वाइट स्ट्रांग. मोर देन 10,000 किलोमीटर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवार्डिंग इज एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर एज वेल, इंक्लूडिंग NHA एंड द मॉर्थ प्रोजेक्ट्स. तो इसमें अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे तो L&T looks quite strong. We are positive on it. We can also look at IRB, which is very strong in the BOT segment. We can look at PNC Infra, where we have been recommending and we are quite positive.
ये सेगमेंट पे आप काफी फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन डिफेंस सेक्टर रिलेटेड भी पूछा गया है, तो मुझे लगता है डिफेंस पे भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट का जो थर्स्ट देखेंगे तो दैट इज ऑन डोमेस्टिक इंडिजनाइजेशन की जो बात कर रही है गवर्नमेंट, वहां पर काफी फोकस है और इसके वजह से काफी ऑर्डर्स कंपनीज को अभी मिलने गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। और इसमें कुछ कंपनी जो काफी बड़ी है लाइक HAL एंड ऑल, दे हैव बीन they're doing well. Their order book is more than 80,000 crore, more than 3 times on future on FY22 revenue, और पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है, 1.25 लाख करोड़ के ऊपर का ऑर्डर पाइपलाइन भी है। तो इस तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है इन द डिफेंस सेक्टर। सो दिस बोथ एंड इंफ्रा एंड डिफेंस द आउटलुक इज क्वाइट पॉजिटिव। Thank you, Pankaj sir. Next question is for Hemali. Hemali, Vishweshwar is asking your views on Bajaj Finance. Bajaj Finance, we have a reduce on the stock. We believe that the stock is expensive from a valuation perspective. Coming to its fundamentals, we believe that the franchisee is a strong franchisee from a lender perspective, and as long as the consumer durable portfolio does well, we should see healthy growth for the company. The pre-earning numbers have been strong and positive, and in an inflationary environment, consumer demand or asset under management increases because of higher inflation, but we would not like to see inflation go out of control such that the propensity to pay falls. We are not seeing that level of inflation. We are expecting to see inflation come down and taper towards the end of the year. So we are not seeing that sort of a concern on asset quality. So our fair value is 5,900, and we believe that all the positives are being factored in or measured in this fair value. So anytime there are dips in the market than this value, then we suggest to buy. The stock remains highly correlated to the markets, and it moves largely with the markets as well. And there are also technical factors that affect. So if Mr. Shrikant wants to add to how technically the charts are looking, then we would surely we can take it. Thank you, Hemali. Next question is from metal sector for Jatin. Jatin, Pratima wants to know your view on NALCO. So जैसे कि हमने बात की फ्रॉम नाल्को और द नॉन फेरस पर्सपेक्टिव, द एल्यूमिनियम प्राइसेस हैव करेक्टेड 12% इन द लास्ट क्वार्टर, और आप उनके पीक से देखते हो तो करीब 34% की गिरावट आई हुई है। बट यस, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हो या अर्निंग एस्टिमेट देखते हो तो डेफिनेटली नाल्को जो मैनेजमेंट बोलते हैं कि अगर एल्यूमिनियम प्राइसेस $2,100 या $2,200 भी आ जाता है फ्रॉम 2,900, दे विल स्टिल मेक अ प्रॉफिट। But our house is that definitely, if you look on the global perspective, alumina will turn into is in a deficit, and probably the deficit will increase from what we have seen in the recent past, but it will not be as per the expected line what we were estimating earlier to the over of 1 million ton. But given the deficit in the system and the current inventory at the multi-year low, we believe that aluminium prices will get support. Now, aluminium being a commodity, so definitely one need to understand the risk of investing in the commodity as a space. But yes, we currently have a ad rating on NALCO with a fair value of 95. But yes, there are near-term challenges in terms of margins. But if the aluminum prices get support and if it moves upward, then there can be an upward revision in estimate as well. Thank you, Jatin. Dear participants, due to time constraint, I'll take one last question now. Arun sir, Balwant wants to know your view on IRCTC. Yeah, IRCTC has corrected meaningfully from the tops that they created last year. We saw a significant up move in the stock some few months back, and the stock has corrected meaningfully. The stock now has come to a relatively decent valuation when we compare to those levels. However, we still believe the stock factors in the recovery and the opening up of economy. The sector that they operate into, I mean, the growth there is not something a very, very superlative kind of growth that we see generally in that segment. Apart from that, one thing that I would also like to point is that there always are concerns with relate to any move from the government in terms of
sharing of fees, user charge, or whatever it is. They do have a good business model where they have monopoly. It's a asset light model that they have. Yeah, maybe. So if someone is really looking to invest, I think they can start adding a little bit on from these levels and keep on adding on corrections. Though we don't have a price target on the stock. Thank you, Arun sir. Now I would like to invite Shrikant sir for closing comments. But sir, it would be great if you could answer Nishikant's one question on which sectors can we focus on for investment in current economic conditions, sir? Yeah, sure. I think, see, like, if really somebody want to focus on any one specific sector where the upside is quite decent and the headwinds are very less, then in that we would like to suggest financial sector where the upside is huge. Auto sectors did extremely well in the near term. We are expecting further more upside, but there are few companies which can do really well. But from the financial sector, there are number of companies. अगर large cap banks की अगर मैं बात करता हूँ, PSUs, private, NBFCs, अगर इन सब के अगर हम कंसिडरेशन करते हैं और अगर ये मॉनसून अगर अच्छा निकलता है, इसके बाद अगर यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर कम आते हैं, इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आएगा तो इट विल कम ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर. सो इफ रियली लाइक somebody want to invest even at current levels with a view of next at least 12 to 18 months, then certainly we should look for adding financials to our positional portfolio. There are a number of companies. ICICI Bank के ऊपर टॉप पिक है हमारा, फिर स्टेट बैंक है या इवन एक्सिस बैंक है कि जहाँ पे हमें लगता है कि उसके भी नंबर्स आने वाले दिनों में अच्छे आ सकते हैं. तो ब्रॉड एक स्पेस अच्छा है, वहां पे आप फोकस कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टॉक्स गिर चुके हैं, जैसे कि मेटल्स के ऊपर हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक गिरे हुए हैं. यहाँ पे हेडविंड्स बहुत सारे हैं और सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में है. इट विल टेक टाइम, बट यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक क्लोज वॉच रखना जरूरी है. न्यूज फ्लो कैसे आता है, न्यूज फ्लो कैसे स्पैन आउट होता है, उसके ऊपर सब डिपेंड रहेगा. और उस पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के बाद हम डेफिनेटली उस न्यूज फ्लो को कवर करेंगे अगर कोई भी न्यूज फ्लो अगर आता है तो. लेकिन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है. लेकिन यस, वेरी फर्स्ट अगर फोकस करना है तो आप फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करें. एंड मैं अगर ओवरऑल एक Q&A सेशन के अगर मैं कुछ ब्रीफिंग्स अगर देखता हूँ या तो अगर मैं अगर इस पर्टिकुलर Q&A को अगर मैं क्लोजली अगर वॉच करके अगर उसके ऊपर अगर कुछ व्यूज रखना चाहता हूँ, तो मैंने देखा है कि कई बार कई सारे हमारे इन्वेस्टर जो है और जो ऑडियंस है या मार्केट के इन्वेस्टर्स है, वो मैक्सिमम स्टक अगर किसी कुछ एक स्टॉक्स में अगर है तो वो है लुपिन लेबोरेटरीज है, कुछ मेटल कंपनीज है, IRCTC है, और काफी सारे लोगों का व्यूज ITC के ऊपर जानना है कि अभी यहाँ से ITC में क्या होगा. काफी सारे लोगों के पास होल्डिंग्स है. नो डाउट कि ITC में 310 का टारगेट हमारे कोटक इंस्टीट्यूशन का है, लेकिन हमें लगता है कि जिस प्रकार से जैसे ये कंपनी खुद को मैनेज कर रही है, हमें लगता है कि इसमें और भी आने वाले दिनों में अपग्रेड्स आ सकते हैं. सो डोंट बी इन हरी टू सेल द स्टॉक सो इमीडिएटली. ऑल्सो अगर जैसे ऑटो में हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी अच्छे नंबर्स दिए थे और काफी अच्छे मंथली नंबर्स वो रिपोर्ट कर रहा है, उसके बाद उसमें काफी सारे अपग्रेड्स आए. वैसे हमें लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स में और अपग्रेड्स हमें देखने मिल सकते हैं. अगर मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रेडर अगर हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है. अगर आप इन्वेस्टर्स अगर हो तो आपको स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है. आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए वो ट्रांचेस में होने चाहिए, पार्ट्स में होने चाहिए, विथ कॉन्फिडेंस होने चाहिए. और इसी वजह से हम we try to cover large cap companies in all our webinars. So keep investing, keep faith. मार्केट में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एज ए इंडिया अगर आप देखें और अगर एफआईएस के फिगर को अगर डोमेस्टिक के फिगर के साथ कंपेयर करें तो एक बात समझ में आ रही है कि एफआईएस कंसिस्टेंटली बेच रहे हैं, लेकिन अभी उनका जो बेचने का जो फ्लो है वो कम होते जा रहा है. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग अभी भी स्टेबल है. और ओवरऑल अगर अर्निंग्स की, जैसे अभी हमने अरुण ने जो बात की थी और पूरे अर्निंग के चार्ट्स के ऊपर बात की थी, तो अगर आप देखें तो जो अर्निंग में जो गिरावट जो एक्सपेक्टेड है वो काफी नॉमिनल है. कुछ बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है. यस, नो डाउट कि बाकी मार्केट्स में एज कम्पेयर टू इंडोनेशिया, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जो है उस कंपैरिजन में अगर मल्टीपल्स देखे जाए तो इंडियन मार्केट्स के मल्टीपल्स, आई मीन टू से प्राइस टू अर्निंग, ये काफी हाई है. और इसी वजह से जो अपना मार्केट है वो एक प्रेशर में है.
एक लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट गिर भी नहीं रहा है. अगर आप रिलायंस देखें तो स्टिल इट इज डाउन just 10% from the highs. Technology stocks are down, but they are rebounding from their lower levels. So broader एक ब्रेथ की बात करें तो मार्केट की ब्रेथ वापस थोड़ी बेटर हो रही है. और अगर आने वाले दिनों में जो मेजर फैक्टर्स है जैसे कि क्रूड है, डॉलर इंडेक्स है, अगर वहां पे अगर हमें कुछ एक और पुल ऑफ अगर मिलता है तो कुछ रिलीफ मिलता है तो हमें लगता है कि ये मार्केट बिल्कुल यहाँ से और बढ़ सकता है. So that's all from my side. Thank you, Shrikant sir. I hope our viewers found the webinar useful. I see a lot of you have been consistently attending our webinars, so we will be happy to hear any feedback you have for us. And if you have joined our webinar for the first time today, do check out Kotak Securities Telegram, Twitter, and Instagram pages for more research updates and recommendations like these. Thank you. Have a good evening ahead. Thank you. Thank you. Thank you.